Is everything okay, Pushpa? My audio is okay, and Yes, audio's DAT good. is fine. Yep, perfect. Everybody Wonderful. will be on mute, and we'll just follow along with you, okay? Okay, yeah, wonderful. Thank you so much. Thank you everyone for joining. And actually today is really special because my dad is also online, and a little bit of a background. So my dad had a small minor stroke about like a month and a half ago, and his voice was a little bit slurry. So we decided to chant Lalita Sahasranam every single day, and that has actually improved his speech. Almost it's like 95% back. So so we're really grateful for the chanting, and we're really enjoying it every day. So I told like last week, Pushpa, that because my dad and I are chanting every day, why can't, if others are interested, why can't everybody join too? And so Pushpa said, yes, why don't we do it? And hence we have everyone here. Thank you so much for joining. And let's start Lalita Sahasranama Stotram. I'm hoping that you all have the link to this stotram that Pushpa forwarded. So it's on lalitachandika.org, and you will find the link there. Okay. So let's start it. Om. 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 Asya Sri Lalita Sahasranama Stotramala Mantrasya Vasinyadi Vagdevata Rishayah Anushtup Chandaha Sri Lalita Parameshwari Devata Sri Madvagbhavakuteti Bijam Madhya Kuteti Saktihi Sakti Kuteti Kilakam Sri Lalita Mahatripura Sundari Prasada Siddhidwara Chintita Phala Vapsya Siddhyarte Jape Viniyogaha Dhyanam Sinduraruna Vigraham Trinayana Marnikya Maulispurat Tara Nayaka Sekaram Smitamukhi Mapina Vachoruham Panibhyamalipurna Ratnachasakam Raktotpalam Bhibrati Saumyam Ratnaghatasta Raktacharanam Dhyayet Paramambikam Arunam Karuna Tarangitakshim Dhritapasankusha Pushpa Bana Chapam Animadhibhiravrutam Mayukaihi Ahamityeva Vibhavaye Bhavanim Dhyayet Padmasanastham Vikasitavadanam Padmapatrayatakshim Hemabham Pitavastram Karakalitala Sadhema Padmam Varangim Sarvalankara Yuktam Satatamabhayadam Bhaktanamram Bhavanim Sri Vidyam Shantamurtim Sakala Suranutam Sarva Sampat Pradhatrim Sakunkuma Vilepana Malika Chumbikasturikam Samanda Hasitekshanam Sasarachapa Pasankusham Asesha Jana Mohini Marunamalya Bhushojwalam Japa Kusma Bhasuram Japa Vidhau Smare Dambikam Om Atha Sri Lalita Sahasranama Stotram Om Sri Mata Sri Maharagni Srimat Simhasaneswari Chitagnikunda Sambhuta Devakarya Samudyata Udyadbhanu Sahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodha Karankushojwala Manorupekshu Kodanda Panchatanmatra Sayaka Nijaruna Prabhapura Majjad Brahmanda Mandala Champakasoka Punnaga Saugandhikala Satkacha Kurvinda Manishreni Kanat Kotira Mandita Ashtami Chandra Vibhraja Dalika Sthala Shobhita Mukha Chandra Kalankabha Mruganabhi Viseshaka Vatanasmara Mangalya Gruhatorana Chillika Bhaktra Lakshmi Parivaha Chalan Meena Bhalochana Navachampaka Pushpabha Nasa Danda Virajita Tara Kanti Tiraskari Nasa Bharana Bhasura Kadamba Manjari Klupta Karnapura Manohara Tatanka Yugali Bhuta Tapanurpa Mandala Padmaraga Siladarsa Paribhavi Kapola Bhuhu Nava Vidruma Bimbasri Nyakari Radanachada
शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदः समाकर्षद्दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्चितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूर मज्जत्कामे समानसा अनाकलितसादृश्य चुबुकश्रीविराजिता कामे सबद्धमाङ्गल्य सूत्रशोभितकन्दरा कनकाङ्गदकेयूर कमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताक लोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्न मणिप्रतिपनस्तनी नाभ्यालवालरोमाळि लताफलकुचद्वयी लक्षरोमरथाधारतासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन्मध्य पट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भ वस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्य रसनादामभूषिता कामे सज्ञातसौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकार जानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्त स्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठ जयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्चन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजाल पराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीर मण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळी मन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्घात स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्त शक्तिसेना समन्विता संपत्करी समारूढ सिन्धुरव्रज सेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्व कोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुध परिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्त वह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्त शक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोप निरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचिता विशङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरण वाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोक कल्पितश्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध स भण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादि देव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्ध काम संजीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटेति स्वरूप मुखपङ्कजा कण्ठाधकटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कट्यतो भागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकळेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तराळस्था मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तराळस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तटिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तुतनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्त्य भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवस्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या सर्वाणि सर्वदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्चन्द्रनिभानना
सातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कळङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा नीरागारागमथनी निर्मदा मदनासिनी निश्चिन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनासिनी निर्ममा ममता हन्त्री निष्पापा पापनासिनी निष्क्रोधा क्रोधशमनी निर्लोभा लोभनासिनी निस्संशया संशयग्नि निर्भवा भवनासिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनासिनी निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहन्त्री सुखप्रदा दुष्टदूर दुराचार शमनी दोषवर्जिता सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वमङ्गला सद्गतिप्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीर्मृडप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारतिः महाभोगा महैश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर् महायोगेश्वरेश्वरी महातन्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता महेश्वर महाकल्प महाताण्डवसाक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुरसुन्दरी चतुष्षष्ट्युपचाराढ्या चतुष्षष्टिकलामयी महाचतुष्षष्टिकोटि योगिनी गणसेविता मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा चराचर जगन्नाथा चक्रराजनिकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघनरूपिणी ध्यानध्यातृध्येयरूपा धर्माधर्मविवर्जिता विश्वरूपा जागरिणी स्वपङ्क्ति तैजसात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभ सहोदरी उन्मेष निमिषोत्पन्न विपन्न भुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्दूरी कृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोह सुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्या रणत्किङ्किणिमेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसग्नि रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कंदा करुणारस सागरा कलावती कलालापा कांता कादंबरी प्रिया
वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेसी क्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचनी संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्त समाह्लादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा चितिस्तत्पदलक्षार्धा चितेगरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः परा प्रत्यक्षितीरूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररस सम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओढ्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवता युक्ता षड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिखारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेशनयन कुमुदाह्लादकौमुदी भक्तहार्दतमोभेद भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्छक्तिश्चेतना रूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजवृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्य यौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी सुभ्रूः शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्ति संहृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामा भावदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालादि धरा रुधिर संस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्यौघ वृथा स्निग्धौधन प्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रय संयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गूढान्न प्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानां भुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा
शूलाध्यायुध संपन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेदो निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादि समर्चिता समन्विता दध्यन्नासक्त हृदया काकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पंचवक्त्रास्ति संस्थिता अंकुशादि प्रहरणा वरदादि निषेविता मुग्धौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जा संस्था संसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदल पद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्ल संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदन प्रीतचित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजाचिता बन्धमोचनी बर्बरालका विमर्शरूपिणी विद्या व्यदाति जगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिसेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्र्यादिवासनालभ्य महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिः परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसामत्ता मातृकावर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता महनीया दयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करीभूत कमलाकोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा भालस्तेन्द्रधनुप्रभा हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिपन्मुख्यराकान्त तिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्ड जननी दिव्यविग्रहा क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुरा त्रिजगद्वन्द्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागधीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणी सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्रा विधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैताद्वैतवर्जिता
अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषा रूपा बृहत्सेना भावा भावविवर्जिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभा गतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठ निवेशित निजाश्रिता राज्यलक्ष्मीः कोसनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्य सन्ध्यासागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकाला परिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदा शिवपतिव्रता सम्प्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रेसी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादि समाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायण प्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रिया लयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदावसुधा वृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्त चित्तकेकि घना घना रोगपर्वतदम्बोलिर्मृत्युदारुकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महासना अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिषूधिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री शुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपा पुष्पनिभाकृतिः ओजोवती द्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणी न्यस्तराजधूः त्रिपुरेशी जयत्सेना निःस्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रससेवदिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करे क्षणा परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुः परात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणी ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगग्नी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दःसारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्धाम वैभवा वर्णरूपिणी जन्म मृत्यु जरा तप्त
जनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुत्कृष्टा स्यान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रहा कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीला विग्रहधारिणी अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्ग निलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालंबा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसार पंक निर्मग्न समुद्धरण पंडिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्ष धन धान्य विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयो निर्योनि निलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठिप्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा भैन्दवासना तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिव कुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पंचयज्ञप्रिया पंचप्रेतमंचाधिसायिनी पंचमी पंचभूतेशी पंचसंख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शंभुमोहिनी धराधरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता समात्मिका बंधुक कुसुम प्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमंगली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चन प्रीता शोभना शुद्धमानसा बिंदुतर्पण संतुष्टा पूर्वजा त्रिपुरांबिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशंकरी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनगाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्ति प्रज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्री शिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवागस्त्यसंवादे श्रीललिता सहस्रनामस्तोत्रकथनम् अम्बिकार्पणमस्तु।
Om Shri Matre Namaha. 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 Thank you, Raj. Let's stay in silence for just a few minutes to really appreciate the group gathering together to chant this for the benefit of world peace and harmony. Let us pray for those in need, especially those who, I get so many letters on people who have lost their jobs due to COVID and have some sickness. Even some people who have COVID itself, long COVID, let's say a prayer for them for healing. And also those with relationship issues in the family. So many letters I get on that as well. Let's say a prayer for everybody. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Raj. Pushpa, should we do Loka Samasta Sukhino Bhavantu 9 times? Sure. Would you lead it? Sure. Everybody can chant as well. So. Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. 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 Thank you, Raj. Thank you, Pushpa. Thank you, everybody. Thank you, everybody. So any comments from anybody who, I just want to kind of open it up to see if anybody would like to say anything about what they experienced or any certain special prayers that they would like to put forth. Please speak up now if you would like. If not, that's okay. Oh, Pushpa, this is Daniel. Hi, Daniel. I just want to mention that I started on last Sunday with the group here, and then I chanted the Sahasranam every day since, and
it seemed like it improved. It just made my life a little better, I think. I think it improved my relationship with my sister a little bit, and I feel like I'm better in action, Mm-hmm. more effective in action. So it seems I also do other practices, but this chanting, Mm-hmm. I think it's easier to do this than the chandi. Yes. Yes, and what I've been told, and thank you, Daniel, for sharing that, because what I've been told basically is mother's energy, of course, is all one, but it's a slightly different energy when you're with Lalita. And Lalita is playful and happy. And I don't know if you guys can feel it, but I do feel very blissful right now just after chanting it. So Rama had asked earlier, well, what is the benefit? Well, the benefit is you get this light, blissful energy about you, right? And the Chandi has a different energy. And that's why we actually, while we're called the Lalita Chandika temple, we want this temple behind me, as you can see here, is the Lalita temple. We want to have a different temple for Chandi just so that we don't, mix the energies, if you will. Chandi has a different energy, and that is the energy of renunciation and giving up and breaking apart and that sort of thing. And Lalita is playful, is happy. It makes you not take things so seriously, and it helps you to accept what's come your way. So Daniel, I think that's probably what you're experiencing, and it's really a great share. Thank you. Thank you. Hi, Mohan. You're This is back. Mohan. Namaste, Pushpa. Namaste. How are you? I'm good. I'm good. I just wanted to add something to what you already said. So I have been chanting Chandipat and Lalita Sahasranama for almost more than 15 years now. Yes. So just my experience of Sure. what I really feel about the energy of both of them. Mm-hmm. So as you rightly said, they both are very different energies. Chandi is more of a raw energy of the goddess. Mm-hmm. It has got no inhibitions of any sort. It is a very raw energy of the goddess. Mm-hmm. Lalita Sahasranama is more of it's a very refined energy, directed just what you want. So that's what I feel about both of them. Okay. Okay. So you're saying Lalita is kind of like an energy that is refined, and it targets what's happening. It's more of the feeling of, how do I put that? It's more of a relation that, just as Daniel said, Yes. It's more of a relation, and then harmony, peace. Yeah, I'd agree with that. Yeah. Yeah, thank you. Anybody else like to share before we close out? I can just say a couple of words real quick. Sorry, this is gonna. Most of you, I've come by once to the temple. I live in San Francisco, so I don't come there too often, but I've come there a couple of times. Yeah, I've chanted the Lalita Sahasranam for a while, and I would say, like, to anyone who's considering it, it's an amazing stotram. It's really, really amazing. It completely, if we let her, she will just enter our life and change everything. That's been my experience. Excellent, excellent. Thank you. Ganesh, I think you were there, and I think I've met you before. Yes, I think you were there, and I was lucky enough to come in when the temple was undergoing construction. Yes, exactly. Okay, good. Good to hear from you. Thank you for joining us. Appreciate it. I wanted to say thank you to Raj for chanting this today, and for the inspiration of his father, and this healing that's is going on is beautiful. So thank you for the inspiration. Thank you, Rama. Okay, Raj, any final words? Actually, no. I wanted to say one thing. I don't know if you're able to see, like, Karunamaya Amma and Amachi there. Do you see those pictures in the? Yes, we do. Yes.
Yes. Okay. So that Karnamaya Amma's picture is like my dad gave it to me, and Karnamaya Amma, when I was in school, in high school, that time my dad used to go and visit her, and that's when he started chanting, or at least he was chanting before that, but she initiated him into chanting and everything. So it's a really fond memory of having Karnamaya Amma here, and of course Amma, I met like like many years ago, and Yes. it's really special because one day I was volunteering at Amma's ashram, and it was after bhajans. And do you see how Amma has lifted her hand and like looking up? Do you see that image, right? I don't see. I Oh, see. you Yeah, you don't see. Okay, so this one. Let yeah, me yeah. so that one, right? Oh, yeah. So, That is so small, Raj. You yeah, should blow that one yeah. up. Yeah, she's got her hand up to the sky like she does when she's singing, and she's bringing up the energy. Yeah, so that one, like it's on one of the Bhajanamritam books that Amma sings, and that day after singing bhajans with Amma, like I had a desire. I felt like if there is a small picture of that, I want to keep it, right? Not as a book cover, but something small. This was like almost 10, 15 years ago, right? Yeah. And then that night I was sweeping the floor in the kitchen, and this was like upside, like backside up, meaning the white part of it was up, right? Mhm. And when I sweeping it, like I felt, oh my God, there is something here. And then I turned it up, and then that was the same picture I wanted. So I think Ganesh was saying, right? Lalita is your mother. You ask her, she'll give you whatever you want. Yeah. So even from the smallest desire to anything big, right? And I've had this one for like 15 years with me, or 12 years. I don't remember when, but like many years ago, and I've had it since then. And then it's a testament that mother will fulfill very small desires to like big desires. Of course, I won't call this a small desire. Whatever desires we have, the mother will fulfill all of those. So I just wanted to share. Great. Thank you. And Amma Ammachi told many times that this time the one thing, if somebody can chant, that would be Lalita Sahasranam. Yeah, it's really very powerful. Yeah, it's really very sweet, and and like many folks here, I've been chanting it regularly, and I enjoy. Yeah, I like it too, just because we all have jobs. Most of us here on the phone probably work or have some responsibilities outside, and this you can for me, if you get it down, and you can do it really very quickly, and so I can do it before work, and it only takes between a half hour to 45 minutes, and it's powerful. And I know every time I do it, it sends me into this. I can enter the world, in the work I'm going to do in the world, with a very bright attitude. And actually, like even right now, after I chanted, I feel like laughing, for example. I just feel very giddy and happy and blissful. So do this before work, or before you're entering into, your responsibilities in life, and it'll change your life for sure. Just like Ganesh said. And Mohan. And one of our names, Pushpa, one of our names is Sadatushta, means forever she's content and happy. Yes. Whatever happens, it's all her grace. Yeah. Okay, with that, thank you, everybody. We'll sign off, and I will post this on the Lalita Chandika YouTube. And if you go to our website, lalitachandika.org, we'll have a link to it as well. I'll have to start some kind of maybe a blog post that has the links to the YouTube channel. Actually, at the top of our website is linked to our YouTube channel where I will put this, but I've got I'll probably have it up by the end of the day. So if anybody wants to rewatch it, and we'll do this every week as best we can. We're not sure about next week, because next week is Father's Day, and we might be having to do some other things, but we're going to try, and we'll let you know. Okay. So namaste, everybody. Thank you. Namaste. Thank you.